Hello, everyone, and welcome back to your weekly stock market overview. ये हफ्ता बहुत इंटरेस्टिंग था मार्केट के लिए. We saw a lot of hand switching taking place. Hand switching क्या होती है? इसके अगर किसी एक बंदे ने 100 रुपये पे शेयर खरीदा और वो 150 पे आ गया है, उसकी होल्डिंग पावर इज लेस देन समवन हु बॉट इट एट 150 बिकॉज 150 वाला चाहेगा कि उसको थोड़ा प्रॉफिट ज़्यादा मिले एंड वो वहाँ होल्ड करके रखेगा. जो 100 वाला है वो कहीं ना कहीं सोच रहा होगा मैं प्रॉफिट टेकिंग कर लूँ. सो वाज अ गुड साइन बिकॉज इसका मतलब है कि आपका जो इन्वेस्टर अब आके खरीदारी कर रहा है राइट, तो ही हैज अ टेंडेंसी टू उसके पास ज़्यादा रिस्क कैरी करने का पोटेंशियल है उस पॉइंट पे एट दैट लेवल. तो दैट्स व्हाट वी सॉ इन दिस मार्केट. इसके बहुत सारे रीजंस थे एंड वी विल टॉक अबाउट दैट. बट बेसिकली लेट्स स्टार्ट विद द नंबर्स राइट. तो इस हफ्ते हमारी मार्केट ओपनड एट 168,990 पॉइंट्स एंड वीकली डिक्लाइन Friday closing के बाद was 3.49%, which was almost 6,000 points, 5,892 to be exact. This was a whole week of corrections. तो Monday से लेकर Friday तक हर closing red में हुई थी. I love a red market. I love buying stocks when they are cheap, right? I don't like buying stocks जो वो green में होते हैं because I would rather buy during a correction. So आपका all share index fell from 53,980 points to 51,989, which was a 3.68% loss. Market cap dropped in tandem with the PSX total market cap जो hover कर रही थी around 18.2 trillion, roughly equivalent to $65 billion, $65 billion, right? तो weekly performance अगर हम trend देखें तो last Friday it was down 0.3%, Monday 0.73%, Tuesday 0.94%, Thursday 0.45%, Friday 0.87%, and weekly it came up to 3.49% in the negative. तो ये essentially profit taking थी, cautious sentiment था mid macroeconomic uncertainty क्योंकि हमारे import numbers didn't come great, our current account didn't come great, हमारा fiscal deficit was broadening, year on year हमारी चीज़ें are because of the base effect last year's exceptional performance, तो उन चीज़ों की वजह से हमारे इस साल के numbers aren't great. Total weekly trading volume was around 678 million shares per session. Peak tha 831 million shares, and October 10th ko the closing was a little lower volume wise, 607 million shares traded. Weekly total 6.1 billion shares traded overall. Sustained participation, the value जो trade हुई थी which was about 52 to 78 billion, मतलब 52 से लेके 78 अरब रुपए हर रोज, which was mild contraction during this week's जो Friday closing थी, which was $47 billion around traded, 47 billion rupees traded. So 2.7 million trades executed across 480 companies during the week. जिन sectors ने इंडेक्स को सपोर्ट किया अर्ली वीक के दौरान ड्यूरिंग सेलेक्ट डेज वाज फर्टिलाइजर, इंश्योरेंस, पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन, टेक, रिफाइनरी. और सेक्टर्स जिन्होंने इंडेक्स को वे डाउन किया वाज बैंक्स, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, सीमेंट्स, इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशंस, फार्मास्यूटिकल्स एंड इंजीनियरिंग. Top gainers is hafte, not a buy or sell call ever. We don't do that here. PTC ने gain किया 6.9% multiple sessions, 4.4% on Friday, because इनका भी merger finally got their ruling from Supreme Court to go ahead, and with Telenor. K Electric up 5.49% after the news के एक Saudi investor खरीद रहा है उसे. TRG 6% plus, Askari Bank almost 5% plus. इस हफ्ते के losers were Adamji Insurance down 5%, profit taking after a consecutive set of upper locks. Anglo H, Mizan Bank, HBL, MCB जिनके index percentages बहुत high हैं, तो they were index drags. And a stock called SSOM, which recently entered the index and was down 9.2%, repeated upper and lower circuits constantly. तो key developments and market drivers में ये है कि profit taking dominate करता है. Investors ने profit book किया after historic high of 169,000 जो मैं आप लोगों के साथ mention कर चुकी थी, which was a sentimental resistance level for the market. Macro backdrop में PSSC correction came amid global cautiousness. Investors reassess कर रहे थे अपनी valuations. Gold ने एक all time high break कर दिया. A lot of attention went toward that. Karachi Electric के volumes one of the highest of the week, around 200 million shares traded. Global comparison में अगर हम देखें तो पाकिस्तान का sovereign risk premium fell sharply
Bloomberg ranking Pakistan's second fastest improvement globally after Turkey, though this failed to lift markets in the short term. Despite red closings, penny and speculative stocks saw massive retail-driven volume spikes. PSX ने एक 3.5% decline दिखाया, which is again a healthy correction after an almost 47% calendar year rally. KSE is still up 41.6% YTD and 29.83% fiscal year to date, remaining one of the world's top performing markets of 2025 after being one of the top performing markets in 2024 also. Analysts expect kar rahe the consolidation between 162 to 165,000 points. Obviously, this will be contingent on sustained rupee stability, clarity on privatization and IMF disbursements, earnings season results for bank and fertilizers. A quick snapshot, again, is KSE 100 down 3.49%. All share weekly change down 3.68%. Average daily volume 680 million shares, and 1.3 to 1.5 billion shares in the all share. And top traded stocks volume wise: Karachi Electric, WTL, PTC, BOP, Tele. Market cap is USD $65 billion. So now let's come to the most important news. पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि हम अपना पहला एस्ट्रोनॉट भेजेंगे टू चाइना स्पेस स्टेशन 2026, जो एक लैंडमार्क मोमेंट है. ये अनाउंसमेंट वाज मेड बाय फॉरेन मिनिस्टर एहसन इकबाल ड्यूरिंग वर्ल्ड स्पेस वीक. पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी सुपरको हैज़ ऑल्सो बीन आस्क्ड टू परस्यू अ मून मिशन बाय 2035. एहसन इकबाल ने एम्फोसाइज किया कि रिकनेक्टिंग विद साइंस द की टू रिवाइविंग पाकिस्तान की इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ. इसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि वी कैन पाकिस्तान की एंट्री टू द न्यू स्पेस एज सिग्नल्स renewed focus on scientific and technological self-reliance. State Bank ने despite external heavy debt payments, foreign reserves हमारे increase हुए by $19.7 million to reach $14.42 billion this week. State Bank ने repay किया $500 million का sovereign euro bond, which is a great thing. Total liquid reserves अब हमारे $19.81 billion पे हैं. Commercial banks के reserves थोड़ा बहुत dip हुए by $6 million. इसका impact ये है कि पाकिस्तान का external account management stabilize हो चुकी है एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और मैक्रो इकोनॉमिक रिकवरी का सिग्नल है ये. सऊदी डेलीगेशन टू साइन MOUs फॉर एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. तो दिस हैपन एंडेड अप बूस्टिंग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस. पाकिस्तान की एनर्जी और प्राइवेटाइजेशन सेक्टर्स में पहला सेल परचेस was shares in KES Power Limited. Second MOU K Electric and Trident Energy, ताकि वहाँ JVs explore हों. Prince Mansour bin Mohammed Al Saud led a 30-member Saudi business delegation. Sindh Chief Minister Murad Ali Shah showcased Sindh's $5 billion investable portfolio. Sindh plans to create joint working groups in energy, mining and infrastructure. Oil prices fell जब Gaza में जो whatever's been going on when a ceasefire was called. Oil prices dipped after Israel and Hamas agreed to a US brokered ceasefire, easing global energy risk. Brent crude down 1.35% to $64, WTI at 60.7. The truce includes Israel's partial withdrawal and hostage exchange. OPEC's smaller production hike ने भी इस price stability को push दिया. Analysts expect कर रहे हैं a return to supply-demand fundamentals. Pakistan की auto sales jumped 67% year on year. Total car sales 17,174 units in September 25 versus 10,297 last year. 1300cc plus category में Toyota, Honda, Hyundai dominated growth. LCVs, vans and Jeeps also surged 101.17% year on year. Truck and buses fell 27% year on year. China retaliated with port fees on US ships. They announced a special port fees on American ships, retaliating against US trade restrictions. जिसकी वजह से आपका कल रात we saw that not only yesterday the US stock market also take a hit, लेकिन the cryptocurrencies as well. So the fee starts at 400 yuan per ton, rising annually. This move is a response to US measures against Chinese shipbuilders. China is currently dominating global shipbuilding with nearly 50% market share. Weekly inflation, SPI rose 0.17% week on week, 4.34% year on year. That was part of the numbers जो मैं आपको कह रही थी कि इनकी वजह से हमें थोड़ा सा cautious रहना पड़ेगा. State Bank ने 3.45 trillion inject किया via OMO.
which is open market operations, to ease liquidity shortages, rupees 3.25 trillion via reverse repo, conventional rupees 1.139 billion via Islamic Mudarba. Tenors 7-day, 14-day at 11% rates, ताकि शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मैनेज हो बैंकिंग सिस्टम में. बेसिकली ओपन मार्केट ऑपरेशन ये तब होता है जब स्टेट बैंक ऐड करता है या रिमूव करता है कैश को फ्रॉम बैंक्स टू कीप इंटरेस्ट रेट स्टेबल. रिवर्स OMO का मतलब है कि स्टेट बैंक पैसा देता है बैंक्स को टेम्परेरली यूजिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स एज कोलैटरल. तो इससे बेसिकली दिस इंडिकेट्स कि शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी टाइटनेस है बैंक्स में, लेकिन स्टडी मॉनिटरी कंट्रोल बाय स्टेट बैंक ताकि आप स्टेबिलिटी मेंटेन कर पाएँ. Silver neared a 40-year high amid US shutdown. Actually, last time it reached this high price was 2011. So, key drivers, obviously, I spoke to you guys about this on Instagram as well, which is rising industrial demand and usage and consistent supply. तो ट्रेडर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फेड रेट्स आएंगे, फेड रेट कट्स आएंगे अक्टूबर दिसंबर में. अदर देन दैट स्टेट बैंक गवर्नर ने हाईलाइट किया कि इंक्लूसिव ग्रोथ और माइक्रो फाइनेंस इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए व्हेन ही वाज एट द माइक्रो फाइनेंस कॉन्फ्रेंस. फाइनेंशियल इंक्लूजन स्टेबिलिटी की पिलर्स हैं सस्टेनेबल ग्रोथ में. इन्फ्लेशन इज प्रोजेक्टेड टू स्टे विद इन 5 to 7% रेंज. Forex reserves are nearly 5x higher than they were Jan 2023 में. Launch of climate risk fund and risk coverage scheme for small farmers. Microfinance loan limits raised to 5 million rupees for agriculture and housing. Financial inclusion up to 67% in 2025. Target है 75% by 2028. PTCL Telenor merger की वजह से आपकी वैल्यूएशन आउटलुक बूस्ट हुई है, नॉट अ बायर सेल कॉल. उसका जो एक्विजिशन हुआ है Telenor is expected to lift its fair value above rupees 65% per share according to Top Line Securities, not my words. The deal is worth 100 अरब से ज़्यादा है रुपए में, 108 billion to be exact. It's structured as cash-free and debt-free. EBITDA up 15 to 16%, ARPU up 30% since negotiations. Projected earnings growth from rupees 3.7 to 4.9 over 3 years. And EV/EBITDA multiple at 2.25x below regional peers. वीकली टेक अवे ये है कि पाकिस्तान ने बहुत मेजर स्ट्राइड्स की इन स्पेस एक्सप्लोरेशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. एंड जब ग्लोबल मार्केट्स रिएक्ट कर रही हैं टू ईजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड शिफ्ट कर रही हैं इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशंस, डोमेस्टिकली हमारी ऑटो सेल्स सर्ज्ड, इन्फ्लेशन ओकेश, स्टेट बैंक ने लिक्विडिटी मेंटेन की क्योंकि दे प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. So, to summarize everything, Donald Trump has announced a 100% tariff on all Chinese imports starting next month and imposed export controls on critical software. ये move follow करती है Beijing के new restrictions on rare earth mineral exports and signal करती है एक rapid deterioration of US-China trade relations once again. Looks familiar. So, key points ये हैं कि Trump called China very hostile. There's a post, if we could paste it here, उनकी जो tweet थी. And threatened to cancel his meeting with President Xi Jinping. And China dominate करती है rare earth mineral production at 80%, जो crucial होता है EVs के लिए, semiconductors के लिए, and of course defense tech. ट्रम्प की ट्वीट के बाद S&P 500 2.7% डिक्रीज हुई. इट फेल दैट मच, जो उसका सबसे स्टीप ड्रॉप है सिंस अप्रैल. बीजिंग ने मोनोपोली इन्वेस्टिगेशन इनटू क्वालकॉम लॉन्च कर दी, पोटेंशियली स्टॉलिंग इट्स मर्जर. चाइना यही प्लान कर रहा है टू चार्ज न्यू पोर्ट फीस फॉर US linked ships. US-China trade detente since May now looks fragile with 30% tariffs already in place on Chinese goods. पाकिस्तान साइड पे आपका IMF स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अभी इज़ टू बी डिटर्मिन्ड, बट वी आर लुकिंग पॉजिटिव ऑन इट. हमारे फाइनेंस मिनिस्टर विल मीट IMF MD Kristalina Georgieva, World Bank President Ajay Banga, and officials from IFC and MIGA. He will also engage with credit rating agencies, investment banks, and US Treasury officials.
Pakistan अपना case present करेगा for macro stability, digital reforms and tax broadening. Minister will speak at events hosted by WEF, Atlantic Council and Peterson Institute. तो इसकी implication ये है कि IMF के साथ again a successful deal will unlock foreign inflows, investor confidence increase होगा. Last time our market started rallying again because of this, and हमारी external financing stability support होगी जो बहुत essential है amid rising global uncertainty. And then we have all of the news regarding our mergers with Saudi, which will bring more inflows. So that brings us to an end on this weekly update. I hope you guys enjoyed it, and I will be back next week. Let's see what the market goes. I'm looking forward to it. I personally don't care if the market is up and down. मैं तो consistently अच्छी companies में invest कर रही होती हूँ. So I will see you guys next time. Take care. Bye.